This is Aman from Upmost Stocks. We hope that you are doing well. So yesterday we had covered stock analysis of CDSL and KPIT Tech, and both have done as per our expectations. CDSL wasn't able to show any kind of strength even when the market went up from the lows to the highs of the day, and KPIT Tech again maintained the breakout, gave the breakout of the flag pattern, and has held it today. Now we need to see whether it will be able to hold it in the days to come or not. So after that, you can create a projection in your mind based on our video, basically only for educational purposes, not for the purpose of taking any trade. Also, before taking any trade or exiting from a stock or putting a stop loss, please consult your financial advisor, because these values can keep changing on a day-to-day basis. Our videos are only meant for your educational purposes and to educate you about technical patterns, possible projections, futuristic prices, resistances, supports, and how these work in technical analysis. So today we will be doing a very heavyweight stock that is Bajaj Finance. A lot of people have been like stuck into it because it has fallen from the highs of almost 8050, and it is down by 2000 rupees almost. So it was at 8050 on 18th of October, and it made a low of 6847 on 20th of December. So exactly after 2 months, we can say it is down by approximately 8050 minus 6800. Just a second, it is coming out to be, if I take the exact value, it is 6492. So almost down by 1500 points from its highs of 8050. However, almost all the stocks have declined, so we cannot say that only Bajaj Finance has shown such a drastic fall. You will see these kind of falls in almost every other stock, because the market has also fallen from 18,600 to 16,400. So we cannot solely blame Bajaj Finance. Yes, a lot of people are stuck into it. So now we will be going to do some basic stock analysis of Bajaj Finance. And if you need to like view our credibility, or you need to judge our credibility, you can view our past videos and try to like link them with today's performance or maybe past performance, and you will come to know that how these levels can work, and what kind of projections we make, and whether these projections actually work or not. Again, don't take any trade based on these videos. So again, there is a problem, because again there is a bearish pattern forming in inverted flag pattern forming in Bajaj Finance. But today we are going to be a little different, because we have already taught you about this inverted flag pattern, bullish flag pattern in a lot of videos. So we will be doing something different. We will be discussing about the channel. This is the channel. Okay, these two lines are the channel. We are removing this line because we have just dropped this line to show you how an inverted flag pattern is forming. We will be removing this line. So now there is a channel. You can see that this is an upward sloping channel. This is also a kind of consolidation that is happening within a particular range, but it is happening in an upward type. Like first, you can say that the second high is higher than the first high. If the first high was at 6864, the second high is at 6987. Similarly, this channel shows that Bajaj Finance is making higher lows. If this low was at 6540, this low is at 6660. So it is an upward sloping channel. So what is the significance of channel? Basic significance is that a channel is also a kind of consolidation. A consolidation is happening within this region. So till the time Bajaj Finance gives a breakout either on the upside or on the lower side, it can continue to operate within this region. It is likely to find resistance at this level, support at this level, resistance this level, support at this level, and until and unless it gives a breakout of any of these lines, it will continue to happen. So let us say Bajaj Finance has to go up from here. If Bajaj Finance has to go up from here, so what can be the possible target for Bajaj Finance in the coming days? For that, we need to identify two values. That is normally the exact definition we can say is we need to identify the width of the channel. What is the width of the channel? For that, we will take two values. We can take the higher of this value. This you can take the upper line this and the lower line this. The upper value would be 6810 and the lower value would be 6500. You can take it as the first high and the first low.
So this will help you in arriving at the width of the channel. So it is, we have already mentioned that upper value 6810, lower value 6500, difference is 310. So we can say as to when Bajaj Finance will show a break up on the show a breakout, let us say on the upside. So it is possible that Bajaj Finance can move up to 300 rupees from the breakout level. Let us say Bajaj Finance gives a breakout of the channel at around this level, this line. Okay, so this line is your, just a second. So this line is coming around to be 7060. So there is a possibility as to when Bajaj Finance will give a breakout at 7060, it can touch a value of 7360 in the days to come. So it can reach somewhere like around here, just like here. So it can go up to 7360 if it gives a breakout at this line. However, we need to see that at this line of 7060, Bajaj Finance is going to face two, like you can say, two resistances. First would be this line, because this is every time Bajaj Finance has tried to cross this region, it has fallen down. You can see last time also it went up till here and then fall back. So there is a probability that it is going to find resistance at this level, not only because of the channel's upper line, but also because there is an already existing resistance at that level. So as of now, Bajaj Finance, if we don't consider this channel, Bajaj Finance is likely to face resistances at two major levels. One would be 6996. Okay, we have mentioned 6996 or 7000, and the other one would be 7059 that we have already discussed. So if we have to take out the breakout of the channel only, then it is likely to find resistance if it tries to break this line. Okay, so it can be a little difficult because there are two resistances. One is of the channel and the other one is of the line. You can see this resistance is already in place. Let me remove this line just a second. So you can see that this line is already there. Bajaj Finance is not able to cross this line since last few days. So now we hope that it is quite clear to you as to how we have determined the price projection of Bajaj Finance in the days to come on the upside. However, if it breaks the channel on the lower side, let us say if it breaks the channel from the value of, it goes up from here, it comes back at 6869 and it breaks the channel on the lower end. So there is a probability that Bajaj Finance might touch 6500 again in the days to come, the fall of 310 from the breakdown level. So this is the channel. This is another way of studying technicals. Obviously, there is inverted flag pattern. In that case, the projection would be a much higher value. But for the intermediate to short term, we can say that Bajaj Finance can go up to 7360, provided it breaks this resistance and maintains this resistance and continuously operates above this channel or this resistance. But the breakout of this channel will occur either at 7060 or it can occur at 7121 because it is an upward sloping channel. So the breakout can occur at any of these values. Till the breakout occurs, it will continue to consolidate in this region, and we are not likely to see any sharp movement either on the upside or on the downside till this channel is in place. We need a breakout on any of the side, either on the upside or on the downside. So just to repeat very quickly, the possible target of Bajaj Finance in the days to come can be 7360 on the upside. On the downside, it can be 6500. How we have derived that value? We need to identify two values using the channel upper end value of the channel and the lower end value of the channel. The difference between these two values is known as the width of the channel. Upper value is coming out to be 6810, lower value is coming out to be 6500. Difference is coming out to be 310. So we will add this value to the breakout value, or the breakout will add this value to the breakout value, or deduct this value from the breakdown value, and we can arrive at a possible projected value of Bajaj Finance in the days to come. For example, if Bajaj Finance breaks this channel at 7060, so you can add 310 to that value, and Bajaj Finance will most likely reach at 7370 or 7350 in the days to come. However, if it breaks this level 6875 on the downside, then it can come up to 6575 or 6550 in the days to come. So you can keep a check on this channel
and consult your financial advisor as to how you should be holding your position in Bajaj Finance. तो अब हम इसको हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं बजाज फाइनेंस को ऑन व्यूअर्स के लिए जिनको हिंदी थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। हम एक ही वीडियो में दोनों तरीके से कवर कर रहे हैं ताकि हमें दो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स ना बनाना पड़े और कंफ्यूजन क्रिएट ना हो व्यूअर्स के बीच में। तो बजाज फाइनेंस काफी लोगों की होल्डिंग में है, ठीक है, और काफी बुरी तरह ये गिरा है। ऑलमोस्ट 8050 के लेवल से 18 अक्टूबर को ये गिरा है ऑलमोस्ट 6492 के लेवल पे। पिछले 2 महीने में हम लोग कह सकते हैं तो दी फॉल इज कम से कम भी 400-500 रुपए का, सॉरी 1500 रुपए का फॉल इसमें आया है। 8050 से लेके 6492 तक का एग्जैक्ट फॉल पूरा 1500 के करीब ही आता है। तो अभी बजाज फाइनेंस एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। ये एक चैनल के अंदर ऑपरेट कर रहा है, आप देख सकते हैं कि चैनल के अंदर ऑपरेट कर रहा है। चैनल भी एक तरह का टेक्निकल पैटर्न ही होता है टेक्निकल एनालिसिस में। इस बार हम लोग इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगी और वो एकदम से अभी बजाज फाइनेंस मीट भी नहीं कर पाएगा। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, तो सेम चीज को बार बार समझाने का कोई मतलब नहीं। आप देख सकते हैं अगर मैं आप एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो आपको एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न नजर आएगा। आपका ये पोल हो जाएगा और ये उसके अपर और लोअर लाइन्स हो जाएंगी। तो चैनल कैसे काम करता है, चैनल में आपको दो चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं, एक तो अपर वैल्यू ऑफ द चैनल और दूसरी लोअर वैल्यू ऑफ द चैनल। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग विड्थ बोलते हैं, विड्थ ऑफ द चैनल। तो जो इस केस में अपर वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6810 और लोअर वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 6500। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं तो डिफरेंस 310 रुपए आ रहा है। तो जब भी बजाज फाइनेंस इस चैनल को तोड़ेगा या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तो हम ये कह सकते हैं कि बजाज फाइनेंस में 310 रुपए का मूव आ सकता है या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर बजाज फाइनेंस मान लीजिए इस चैनल को इस लाइन पे तोड़ता है, जो ये लाइन हमने बनाई है जो बजाज फाइनेंस के लिए रेजिस्टेंस की तरह अभी काम कर रही है, 7060 वैल्यू इस लाइन की। तो 7060 प्लस 310 आप ऐड कर दोगे तो पॉसिबल टारगेट आएगा 7370 से लेके 7400 के बीच में। तो यहाँ तक बजाज फाइनेंस जा सकता है शॉर्ट टर्म टू इंटरमीडिएट टर्म में। अगर वो नीचे की तरफ तोड़ता है, मान लीजिए उसने तोड़ा 6920 रुपए पे, तो आप उसमें से 310 रुपए माइनस कर देंगे तो 6600 के अराउंड फिर बजाज फाइनेंस नीचे गिर सकता है। बट बजाज फाइनेंस अभी एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है इस चैनल के अंदर। बजाज फाइनेंस में किसी भी तरह की शार्प मूवमेंट के लिए इस चैनल का टूटना जरूरी है और उससे पहले बजाज फाइनेंस को यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आ रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे फंस रहा है बार बार ये। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये 6996 या 7000 के पास है और दूसरी जो रेजिस्टेंस है उसको 7059 के पास है। तो 7059 पे इसको थोड़ा क्रॉस करना मुश्किल होगा क्योंकि वहां पे इसको डबल रेजिस्टेंस फेस हो रही है, एक इस लाइन की भी और एक इस चैनल की भी। अगर ये तोड़ता है तो हो सकता है कि हमें थोड़ी शार्प मूवमेंट अपसाइड की नजर आए। पर जैसा कि हम लोग अपने हर वीडियो में बोलते हैं, आप प्लीज कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा इन वीडियोस के बेसिस पे। ये कंटेंट हम सिर्फ आपको एजुकेशन के लिए दे रहे हैं। ये पैटर्न्स काम करते हैं बट इनको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर भी करना पड़ता है, ये डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस रिवाइज होंगे, उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत है। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज आप खुद से ट्रेड मत लीजिए जब तक आप अपने आप को अच्छे से ट्रेन नहीं कर लेते हैं, ठीक है। कोई स्पेशलाइज्ड एजुकेशन मतलब कोई प्रोफेशनल आपको हजारों लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, पर आपको सिस्टम के सामने बैठना पड़ेगा और कॉन्टिन्यूसली टाइम देना पड़ेगा, तभी आप स्टॉक मार्केट को सीख सकते हो, उसके पैटर्न्स को समझ सकते हो और अपने स्टॉप लॉसेस को, अपने टारगेट्स को खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको कुछ क्वेरीज, कंसर्न्स या कमेंट्स पोस्ट करने हैं तो आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वी वुड अप्रिशिएट देम और हम जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश भी करेंगे। थैंक्स अ लॉट, दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।